A warm hello to all the learners of Knowledge Junction. This is a very important video where we are going to discuss the orientation to Mppsc Assistant Professor English 2025, the forms of which are just recently out. And those students who have qualified NET or they have completed their PhD or they have qualified their state SLED, in this case it is MP. So you can all fill this form. The dates are out. Just recently they have started the application form. So apart from this course which I am going to give the orientation is, of course, as the syllabus is quite similar to NET English syllabus also. So this is very helpful for all NET aspirants. And of course, our very own Uttarakhand students, UKPSC students, Poly English main syllabus. I have tried to write here on the board the syllabus of Mppsc. I have written in black ink, and our syllabus of UKPSC Poly English I have written in blue ink. Okay, and I will use the red ink for making some special points. Okay, so let's begin this orientation. As you can see, most of the units are common, and especially you can say this course is designed for the higher level students. Like, it's not specifically for LT, so that is very important, and it's also for lecturer. It would be beneficial, but I would suggest that those students who are weak in you can say screening, they should first focus on screening as well. But those who have filled the form for poly, for them it's also going to be very useful, or if you are looking for NET. Okay, so let's start. So unit 1 in the syllabus of Mppsc is Chaucer to Shakespeare, very common unit, okay, and a very important unit. So Chaucer is where our English literature properly begins. Okay, so we can say it's 14th century, and just roughly speaking, Chaucer is supposed to be born in the year 1340 and he passed away in 1400. So roughly speaking, age of Chaucer is from 1340 to 1400. But this unit covers 2 to 3, you can say, ages. So after Chaucer, we have got the 15th century, which is roughly from 1401 to 1485. All right. So 1401 to 1485, this is what we call, you can say, the barren age, because literature in this period was unproductive, and most of the writers were who were present were not of the same caliber as that of Chaucer. So we can say, and also language was in the state of formation. So literature, the growth of literature was stagnant, and we can say that literature cannot prosper. In any way, we say that for literature to flourish, we need leisure and internal peace. This is a question that was asked in NET, that what are the two important conditions for literature to prosper and bloom? The two important conditions are leisure, that means people should have some free time, and internal peace, that means there should be at least peace in the state. Then only you can think of literature, isn't it? So, but all these things were missing. That's why this age is barren age. Okay. This age is also called as sometimes dark age also. So there are different names. I will not go into detail of these names. So 1485 to 1557 is the third age of this period, and that is, we can say, Tudor age also, because the first dynasty of England, Tudor dynasty, was started. And also this is also called as early Renaissance, because writers like silver poets, very famous term, silver poets were prominent in this age, that is the early Renaissance, like Wyatt in Surrey, you must have heard about them, Total's Miscellany, which came out in 1557. All right, so 1485 to 1557 is the time period called as early Renaissance, and then the fourth and the last most important period of first unit is, of course, the Elizabethan age, the flowering of Renaissance in England, which is roughly from 1558. That is the time when Queen Elizabeth came, and it continued till 1603. She was a huge patroness of literature, and people like Shakespeare, Bacon, Spencer, and university wits, they were, working together simultaneously in this great literary age, Elizabethan age, also called as age of Shakespeare, also called as nest of singing birds. There are various names of this age. Okay, so this is what it covers, our unit 1 of Mppsc AP English. And if you look in our poly syllabus, it is exactly unit 5. What is the difference here is that
In the Mppsc syllabus, they have also defined some topics. I have made a separate video for that also regarding their syllabus. So we will look in these topics separately also in their syllabus. Then unit 2 in their syllabus is Jacobian to restoration, which is exactly unit 6 in our in our Ukpsc poly syllabus. And Jacobian, of course, covers this unit is completely, I can call it as 17th century, which is basically JC square R. If you remember my teaching methodology, I call it as JC square R. So that is J is Jacobian, which is from 1603 to 1625. You can say the first quarter of 17th century is 1603 to 1625. Jacobian, the term is derived from the word Jacobus, which is actually a Latin name for King Jacobus, and in English he is called as King James I. All right, but he was, I think, King James VI of Scotland. Okay, so in any case, C here refers to C refers to the Cavalier Age. Okay, sorry, Caroline Age. Caroline Age is from 1625 to 1649. Okay, in Caroline Age we see the development of Cavalier poets. In Caroline Age we see the development of Cavalier poets. Okay, and then the another C is Commonwealth Age. Okay, Commonwealth Age is also called as Puritan Interregnum. It is the shortest age of our English literature. Question may be asked in your net in all your exams that which is the shortest age of English literature, and that is the Commonwealth Age. Okay, Commonwealth Age is from 1649 to 1660, 11 years. It's also called as Puritan Interregnum. Okay, period. All right. So age of Cromwell also somewhere I have seen this age. So then R is restoration. Now what is being restored? The restoration of monarchy happened because in the 11 years preceding that it was completely disturbed. Parliament was the ruler. So restoration of monarchy happened, and King Charles II, very famous question in all our exams. King Charles II was restored here. So who was being restored? King Charles II. What was being restored? Monarchy. All right. So R is completed here. Then it is then in our Ukpsc syllabus we have seen metaphysical also in this unit 7. So basically metaphysical comes under Jacobean age, John Donne and other, you can say, poets. Then unit 3 is Augustan to Romantic. It is quite a big unit, I think. And Augustan age is the first half of the 18th century. It's also called as Age of Hope. It's also called as Age of Prose. Age of Prose, all right. And it is roughly from 1701 to 1745. Okay, that is death of Alexander Pope. Okay, so this is the first half of 18th century. It's also called as Neoclassical age, if you remember it. The whole 18th century is called as Neoclassical age. So the second half is, of course, Age of Johnson. It's also called as Age of, you can say, Reason. Okay, Age of Prose and Reason together we call it. So second half is roughly from 1745 to 1784. Okay, and this is Age of Johnson. It is variously called as Age of Enlightenment, also called as Age of Reason. Okay, and as I have told you, Age of Circulating Libraries. Okay, these are some of the terminologies that we use for the second half of 18th century. It's a very critical age because it connects you to the succeeding age, that is the Romantic age, and most importantly, in this age, we see the development of novels also. Age of novels, we can you can say call the four wheels of novels came during the second half only, roughly from 1740s, and also the development of Gothic literature. Gothic literature also prospered and flourished. Very important topic for our lecturer students also. Gothic literature came in the second half of 18th century. So that is the Age of Johnson basically. Okay, and also very important group of poets who wrote elegies and who wrote the qualities, merge of neoclassical as well as romantic. They were called as transitional poets, also called as pre-romantics. Okay, so pre-romantics came in the second half of 18th century. All right, so pre-romantics, the three great poets of pre-romantics were Gray, Collins, and there was one more, Blake. Yes, Gray, Collins, and Blake. They were the three great pre-romantic poets that who came in the second half of 18th century. Okay, right. So then
moving forward, this after this in this unit only they have covered the romantic also, which is quite a big unit. Romantic age we know is from the publication of Lyrical Ballads 1798 and continued till Queen Victoria came to the throne. So romantic is from 1798 to 1837, right? So this is the age where we can say Wordsworth and all those romantic poets were there. So Augustine to romantic in. All right, so this is unit 8 and I think 9. Unit 8 and 9 is there. All right, in our poly syllabus. And then unit 4 here is Victorian and Pre-Raphaelite. Victorian age is we can say the age of Tennyson and Browning and Hardy and Dickens. Okay, so Victorian age from 1837 to 1901. That is Queen Victoria's time. Okay, when England was at its peak in terms of imperialism. Okay, and then Pre-Raphaelite is a group of painter poets. They were also pejoratively called as fleshly poets. Okay, Robert Buchanan called them as fleshly poets. Okay, the American critic Robert Buchanan called them as fleshly poets because they wrote or they described too much of poetry of pleasures. Okay, although John Ruskin, the great Victorian art critic, was a huge admirer and supporter of Pre-Raphaelites. Okay, and D.G. Rossetti, the Italian expatriate, was a leader of the pack. Okay, so we have covered this topic in detail in our lecture preparation also, and it's a very marks fetching area, Pre-Raphaelite. I think if you cover this topic, at least 3 to 4 questions will be covered. Okay, so that is Pre-Raphaelites. It's there like unit 10 in our poly syllabus. Unit 5, it's a very important unit. I was discussing the students here also in offline that this is the unit where they have asked a lot of questions, especially in our interview for Mppsc, assistant professor. This is a question they have been asking, like what is the difference between modern and postmodern? What are the key features of modern literature? So for interview aspirants also, for students who are going forward in their career, you should know what is modernism, the key points, okay? And modern literature is covered as unit 11 there. And modernism, I have told you, can be defined in 2 terms. In terms of time frames, you can call it from 1901 to 1945 till the end of Second World War. And second nomenclature can be from 1922, the publication of The Wasteland or James Joyce's Ulysses. This is called the high period of modernism until again the end of Second World War. So in between there are different ages, like Edwardian age is there, okay, which is the first decade of 20th century. Then we have got war poets, okay, and in between there are a small, group of poets like Imagists were there. Okay, Bloomsbury, very important movement. Bloomsbury was also there in the modernism. Okay, you can make separate notes on Bloomsbury. Very, very important marks scoring area. Bloomsbury, who were the writers, who were the poets in Bloomsbury. So Bloomsbury was a typical modernist movement which occurred in I think the second decade of 20th century. And Wolf sisters were the key members of that Bloomsbury group. They were the group of homosexual, you can say experimental writers, right? So Bloomsbury was there. And then, so D.H. Lawrence, and there are many writers, like the 2 legends were W.B. Yeats and T.S. Eliot, of course. James Joyce was there. Virginia Woolf, modern feminist writer, was there. All these writers we are going to cover here. And then moving forward, unit 6. Then this is where it separates the course from, you can say, TGT, PGT aspirants and NET aspirants, because they usually don't study literary theory and criticism. But NET aspirants and all our assistant professor and poly aspirants, they have to study this topic, which is considered as a little tough, and also marks scoring, I think, if you are good, if you have studied them in detail. So literary theory and criticism, it is a huge unit which covers all the movements, starting from in criticism, I would say, from the criticism of Aristotle and Plato till new criticism. And in theory, we start from structuralism and we go on till eco-criticism. So these are the benchmarks which I have just told you. In criticism, Plato to new criticism, and in literary theory, structuralism to eco-criticism. Eco-criticism, sorry, ECO, eco-criticism. So these are the kind of benchmarks from which, under which you will study various units, various thinkers,
romantic criticism is there, neoclassical is there. Okay, there are Victorian critics. Okay, aestheticism is there, and in theory we know structuralism, post-structuralism, postmodernism. Most importantly, post-colonialism is a huge unit. Okay, so these are some of the units. Now, what is the key difference? Always students ask me this question. So, because it is a orientation for the syllabus, I would like to very briefly like to give a comment on it. So, theory and criticism. Criticism is any, you can say, any discipline where you analyze, classify, analyze, and you can say give evaluate a literary text. So जब आप किसी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं, एनालाइज कर क्लासिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं, दैट इज क्रिटिसिज्म. थियरी इज व्हेन you can say it is an orientation towards a, you can say, an idea or burning social issue. ठीक है, कोई भी बर्निंग सोशल इशू है उसकी तरफ अगर आप अपने पॉइंट्स को रखते हैं, और इसमें क्या है थियरी में कि ये सोशियो पॉलिटिकल अप्रोच है, जिसमें कि ये लिटरेरी अप्रोच नहीं है, ये क्या है, हम कह सकते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, जिसमें आप मार्क्सिज्म को, फेमिनिज्म को, जैसे जो सोशियोलॉजी के टॉपिक हैं, पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स हैं, उनसे लिटरेचर को मर्ज कर देते हैं. और लिटरेचर में इसमें हम ये पॉलिटिकल है पूरी तरीके से, हम ये मानते हैं कि हम जिस थ्योरी को प्रोपोगेट कर रहे हैं उसमें जो हमारे कह सकते हैं उनकी जो कैरेक्टर्स हैं वो मार्जिनलाइज हैं, यानी कि समाज में हाशिए पर हैं, उनका शोषण हो रहा है, उनका दोहन हो रहा है, और हमें उनको मुख्य धारा में लाना है. जैसे फेमिनिज्म अगर है तो हम ये पहले ही मान के चलेंगे, असम्पशन होगा कि फेमिनिस्ट और फीमेल्स आर ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड, हैव ऑलवेज बीन एक्सप्लॉइटेड. तो फिर हम वहां से उनके सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल जो एक्सप्लॉइटेशंस हैं उन पर चर्चा करेंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लेंगे, जो लिटरेचर में इन मार्जिनलाइज्ड कैरेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन है उसको हम मुख्य धारा में लाएंगे. यानी कि हम ये कहेंगे कि शेक्सपियर में अगर हैमलेट है तो हैमलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी को नहीं हम एनालाइज करेंगे, हम जैसे जो माइनर कैरेक्टर्स हैं, जैसे रोजेनक्रेंट्स है, गिल्डनस्टर्न है, माइनर कैरेक्टर्स हैं, कोर्टियर्स हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हैमलेट को पढ़ने की कोशिश करें. तो ऐसे बहुत सारे रीटेलिंग ऑफ द हिस्ट्री करेंगे हम, और हम देखेंगे कि अगर हिस्ट्री इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाती तो क्या होता. तो यहाँ पर पोस्ट कॉलोनिज्म अप्लाई हो जाएगा, पोस्ट मॉडर्निज्म अप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो मुख्य धारा में जो मार्जिनलाइज कैरेक्टर्स है उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम थियरी करती है. ये पॉलिटिकल है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये क्या है, एक जो की आइडिया है, की पॉलिटिकल आइडिया, उसकी तरफ एक ओरिएंटेशन भर है, एक झुकाव भर है. ये लिटरेचर के, हार्डकोर लिटरेचर के एनालिसिस की बात नहीं करती, ये कुछ मुख्य पॉलिटिकल इश्यूज को उठाती है और उनको उसमें जो मार्जिनलाइज कैरेक्टर्स हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने की बात करती. तो आई थिंक इसके लिए जो सबसे बेसिक बुक है वो आपको पता ही है, मैंने कई बार एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स को बता दी है बुक, और ये है पीटर बैरी की बिगिनिंग थियरी, लिटरेरी थियरी के लिए मास्टरपीस बुक है पीटर बैरी की. इसका पीडीएफ भी मिल सकता है, आप लोग नेट वाले बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं पीटर बैरी जरूर पढ़ें. इसमें हर थियरी के बाद कुछ की पॉइंट्स, व्हाट द क्रिटिक्स डू करके लिखा हुआ है, और बुलेट पॉइंट्स बने हुए, उनको याद कर लें आप, तो आपका एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू में भी काफी हेल्प हो जाएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है, इसके अलावा पीके नायर, प्रमोद के नायर की बुक भी आ रही है, क्रिटिसिज्म एंड थियरी, या थियरी कंटेम्पररी क्रिटिकल अप्रोचेस टू थियरी करके बुक है, राइटर है पीके नायर. पीके नायर की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी है, और थियरी क्रिटिसिज्म पे भी पीके नायर की बुक है. तो ये दोनों ही बुक आपको पढ़ लेनी चाहिए. अगर आप एडवांस लेवल में जाए, थोड़ा टफ बुक में एमएआर हबीब भी मिल जाएगी आपको, बट वो थोड़ा टफ मानी जाती है, थोड़ा सा उसमें उन्होंने क्रिटिकली उसको देखा. चलिए, तो ये हो गया आपका थियरी एंड क्रिटिसिज्म. ठीक है, अगर हम आगे बढ़े तो ये हमारी यूनिट 15 है यहाँ. फिर इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश अपने आप में पूरी एक यूनिट है, जहां पर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस बीच, और मैं ये कहूंगा कि ये हमारी यूनिट 7 है यहाँ पर, और हमारी यूनिट 14 है. तो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश वही आपका राजा राव, और जो है हम कहेंगे कि जो फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवल जहां से देखते हैं हम. ठीक है, तो वहां से हम देखते हैं मिड 19th सेंचुरी से रफली हम शुरू हुआ, और 20th सेंचुरी में तो बहुत सारे राइटर्स हैं, ट्रियो ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स हैं. मैं अभी बात कर रहा था जिसमें आर.के. नारायण, राजा राव और मुल्कराज आनंद हैं, वो आ जाते हैं. फिर उसके बाद टैगोर बहुत बड़े पोइट हैं, टैगोर से बन के आते हैं क्वेश्चंस. और अगर आप इनके सिलेबस में फिर एमपीपीएससी में अंदर चले जाएं तो उन्होंने स्पेसिफिक राइटर्स दिए हैं, जिससे आई थिंक हमारे पॉली के बच्चों को भी बहुत हेल्प होगी.
क्योंकि हमें राइटर्स ऑलरेडी इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की जो मैं आपको एजेस बताऊंगा और जो मैं नोट्स दूंगा अपने केजे के, वो बहुत शानदार है। आपको बाहर नहीं पढ़ना, नहीं तो बहुत कुछ इसमें ऐसा है जो आपको मिसडायरेक्ट कर देगा और मिसगाइड हो सकते हैं आप। ठीक है, तो इसके लिए आप एक्सपर्ट्स की हेल्प लें। देखो जो यूनिट्स मैं बता रहा हूँ उनको, जैसे कुछ यूनिट्स में क्या कह रहा हूँ आपको, यूनिट 6 है, आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, कितने अच्छे टीचर हो। यूनिट 6 आप अपनी सेल्फ स्टडी के बिना नहीं कर सकते, मैं गाइडेंस दूंगा, लेकिन यूनिट 6 सबसे टफेस्ट यूनिट है। आप एनालाइज कर लेना इसको, यूनिट 6 को आप मोस्ट टफेस्ट लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें समझना मुश्किल है, क्रिटिकल अप्रोचेस हैं, मार्क्सिज्म में क्या कह रहा है, हेजेमनी क्या है, कल्चरल इंपीरियलिज्म क्या है, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं इनके मेन पॉइंट्स आपको नहीं आते हैं। तो इसमें आपको एक्सपर्ट की जरूरत तो है, बट अपना भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको बुक्स से पढ़ के। ठीक है, ये यूनिट ऐसी है कि आप स्मार्ट वर्क करो और जो टीचर्स के नोट से पढ़ लो, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, नहीं तो बहुत सारे कंटेंट पढ़ा हुआ रहता है, फायदा नहीं है उतना पढ़ने का। PYQs इसके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, और सिलेबस में अगर राइटर्स डिफाइंड है तो और यूनिट 8 पे आते हैं। देखो यूनिट 8 क्या है यहाँ पर, अमेरिकन एंड अदर नॉन ब्रिटिश लिटरेचर। ये ऐसी यूनिट है जिसके लिए आपको अगेन बहुत मेहनत नहीं करनी है, सेलेक्टेड राइटर्स को पढ़ना है और अच्छे से उनको याद कर लेना है। स्पेशली इसमें नॉन ब्रिटिश में हमारे MPPSC के सिलेबस में जैसे ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर है, ठीक है, कैरेबियन है या कैनेडियन है, उनके राइटर्स ऑलरेडी डिफाइंड करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि हमें वहां पर थोड़ा सा हमारा मार्जिन डिफाइंड है। बट पॉली में हमारे राइटर्स नहीं दिए ऐसे, बट तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर कुछ मैं राइटर्स की लिस्ट दूंगा, उन्हीं को आपको पढ़ना पड़ेगा और उनके मेन टाइम पीरियड्स। मैं सभी बच्चों से बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे उत्तराखंड के बच्चों को स्पेशली ऑप्शनल में वो लोग अमेरिकन ले लेते हैं और अमेरिकन में फिर लिटरेरी एजेस से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो मैं अभी सजेस्ट कर दे रहा हूँ, अमेरिकन हम सभी नहीं पढ़ा होगा, अनलेस आपने अमेरिकन पढ़ा ही नहीं है तो बात अलग है, लेकिन फिर भी सिलेबस में तो है ही। अगर कई बच्चे लिंग्विस्टिक्स ले लेते हैं MM, तो खैर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप MH अब्राहम्स ग्लॉसरी में, जहां पर अमेरिकन पीरियड्स करके एंट्री है, पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वहां पर आप MH अब्राहम्स में चले जाओ और अमेरिकन लिटरेचर की हिस्ट्री वहां से खाली बस देख के नोट्स, उन्होंने पूरे पीरियड्स डिफाइन किए, 1607 to 1775 colonial period, 1775 to 1828 early national period, 1828 to या 1836 to 1865 सबसे मेन है रिनेसा, अमेरिका का रिनेसा, जिसको अमेरिका की रोमांटिक एज भी कहा जाता है और इसी को साथियों कहा जाता है ट्रांसेंडेंटलिज्म। ठीक है, हाँ क्या पीरियड बताया मैंने, 1836 to 1865। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है, आप इसको मार्क करके चिन्हित करके लिख सकते हैं और इसको कहा गया ट्रांसेंडेंटलिज्म, या फिर क्या बोला मैंने, रिनेसा ऑफ अमेरिका, या फिर क्या बोला मैंने इसको, रोमांटिक एज ऑफ अमेरिका। इसके बिल्कुल पिलर हैं, इसके फाउंडिंग फिगर हैं राल्फ वाल्डो इमर्सन। ठीक है, हम कह सकते हैं कि पायनियर हैं, फोर रनर हैं राल्फ वाल्डो इमर्सन। ठीक है, चलिए खैर, तो इमर्सन, थोरोयू और एडगर एलन पो सारे लेजेंडरी नेम से, वॉल्ट विटमैन फिर बाद में आ जाते हैं यहाँ पर, और मार्क ट्वेन, ये कुछ ऐसे नाम बताए हैं मैंने जहां से क्वेश्चन भर भर के बनेंगे। ठीक है, उसके अलावा नॉन ब्रिटिश में मैंने आपको बता दिया ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, कैरेबियन, ये तीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, कैरेबियन। और एक मैंने आपको बताया जो कैरेबियन है, उसी को अगर आप बड़ा फ्रेम ले लो तो वो क्या बन जाता है आपका, कलर्ड लिटरेचर, जिसको हम ब्लैक कहना अवॉइड करते हैं क्योंकि कलर डिस्क्रिमिनेशन ब्लैक करने से हम कह देते हैं, तो ब्लैक लिटरेचर नहीं कहते हम, हालांकि वो अफ्रीकन, एफ्रो अमेरिकन भी कह सकते हैं हम उसको, या फिर कलर्ड लिटरेचर कह सकते हैं, जिसमें एक पार्ट उसका कैरेबियन आ गया, एक पार्ट अफ्रीका अमेरिकन यानी अमेरिका में जो ब्लैक्स हैं उनका लिटरेचर हो गया, और एक पार्ट क्या हो गया बेटा, अफ्रीका के जो ब्लैक्स हैं उनका। तो तीन मैंने आपको बताए, और इसको क्या बोला मैंने, कलर्ड लिटरेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका में रेशियल इक्वालिटी की बात की गई है। ठीक है, और तो वहां पर मैंने क्या बताया आपको, कैरेबियन एक चला गया जो कैरेबियन ब्लैक्स हैं, एक चला गया आपका एफ्रो अमेरिकन ब्लैक्स, यानी ऐसे अमेरिकन जो अफ्रीकन हैं और वही सेटल्ड हैं। ठीक है, और तीसरा क्या गया, प्रॉपर अफ्रीकन, जैसे जो नाइजीरिया है, ठीक है, घाना है, ये सब जो अफ्रीकन कंट्री। तो तीन हो गए आपके, किसके अंदर आया, ये कलर्ड लिटरेचर के अंदर आ गया, कैरेबियन, एफ्रो अमेरिकन और अफ्रीकन। ठीक है, ये तीन आपके किस में चले गए बेटा, ब्लैक लिटरेचर या कलर्ड लिटरेचर में चले गए, जो कि इस यूनिट का पार्ट था नॉन ब्रिटिश में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आई होप आप लोग सब सिस्टमेटिकली इसके नोट्स बना रहे होंगे, जो मैं बता रहा हूँ आपको, काफी सालों की रिसर्च है अपनी। यूनिट
12 है ये अपने वहां पर। और यूनिट 9 अगर हम आए तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड ELT, ठीक है, ELT बोले तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। इसमें आपके दो ही मेथड्स आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका GT मेथड कहते हैं, GT ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और एक क्या कहते हैं DM यानी डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, ये दो से ही क्वेश्चंस बनेंगे। इनफैक्ट MPPSC ने अपने सिलेबस में स्पेसिफिकली इन दो मेथड्स को तो लिखा ही है ELT में, और यहीं से हमारे नेट वालों के लिए भी बनते हैं क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, GT मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन, जिसको ओल्डेस्ट मेथड या टेक्स्ट बुक मेथड कहा गया, और दूसरा क्या बोला मैंने, डायरेक्ट मेथड, जिसको मदर्स मेथड भी कहा गया है, जिसमें कि हम जो टारगेट लैंग्वेज है उसी का यूज करते हैं। इसमें हम जो डायरेक्ट मेथड है इसमें हम नेटिव लैंग्वेज का यूज ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इंग्लिश पढ़ानी है तो मैं हिंदी में नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, तो मैं इसमें क्या है मल्टीपल जो है विजुअल एड्स का यूज करूंगा, और इसमें टारगेट लैंग्वेज का ही यूज करने को फोकस किया जाता है। ये डायरेक्ट मेथड बोला मैंने। GT मेथड में लेकिन हम अपनी नेटिव लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, इसमें ट्रांसलेशंस का यूज होता है। तो ये है आपका ELT। बाकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज काफी ट्रिकी यूनिट है, बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसको आप शॉर्ट में मेरे नोट्स से पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा जो हमारे कोर्स के साथ ही है, ठीक है। इसको मैंने पॉली वाले बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा दिया बहुत डिटेल में, 10-12 लेक्चर्स लेके, ठीक है। चलिए, तो ये यूनिट 10 हो गया आपका, रिसर्च मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी। तो ये तो हमारी सबसे इस समय बजिंग यूनिट कहूंगा मैं, इस समय सबसे ज्यादा लीस्ट क्या कहेंगे अटेंशन इस पर बच्चा देता है, क्योंकि ये जो है इसमें मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी, इसका पूरा नाम है रिसर्च मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी इन इंग्लिश लिटरेचर। हमारे इंग्लिश लिटरेचर में क्या क्या रिसर्च मेथड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एथनोग्राफी बहुत फेमस है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म है, ये काफी डीप में पढ़ना पड़ता है। मैं इसके लिए मैं वही कहूंगा आपको, इसमें से क्वेश्चन मेनली MLA से आ रहे हैं। MLA क्या है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ये एक तरीके से फॉर्मेटिंग करने की यूनिट वो है, संस्था है, जो बताती है कि अगर आप थीसिस लिख रहे हो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, कहीं पर भी, तो आपको MLA के फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है। हालांकि MPPSC के सिलेबस में 8th एडिशन लिखा है इसका, बट अब इसका 9th एडिशन आ गया MLA का, ठीक है। तो MLA में कैसे लिखा जाता है, जैसे जब आप टेक्स्ट साइटेशंस करते हैं तो उसको कैसे लिखा जाता है, फॉन्ट साइज क्या हो आपका, पेज का मार्जिन कितना छोड़ना है आपने, ठीक है, तो वो फॉर्मेटिंग कहते हैं जिसको हम, ठीक है। तो वो जो है आपका MLA फॉर्मेटिंग हमें पढ़ना पड़ता है। और सबसे मेन क्वेश्चन इसके यहाँ से बनते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, एथनोग्राफी, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म, जो हमारे लिटरेचर में स्पेसिफिकली जो रिसर्च होती है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वगैरह। तो ये आपका एक यहाँ तक का यूनिट 10 का इनका सिलेबस हो गया। अब इसके अगर हम थोड़ा सा साइड स्टेप करें तो हम देखेंगे कि जो हमारी यूनिट 1, 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5, ये जो यूनिट्स जो मैंने नहीं बताई अभी, 5 तो यहाँ पर बता दिया मैंने। तो अगर हम देखें तो हम इसमें देखेंगे, हमने इसमें देखा था कि 1 और 2 यहाँ पर कवर कर लिए हमने, ठीक है। पॉली की यूनिट्स बात कर रहा हूँ, ब्लू से लिखा है 1 and 2 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ELT। अब 3 लिटरेरी टर्म्स पॉली में है, यहाँ नहीं है MPPSC के, बट काम आएगा ये, ठीक है। और यूनिट 4 क्या है, क्लासिकल लिटरेचर, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, और पॉली में है ये, हमारे MPPSC में नहीं है, बट क्वेश्चंस बनते ही, ठीक है। इन 4 यूनिट्स को मैं हमारे उत्तराखंड के बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। यूनिट 13 जो है सब ऑल्टर्न, ये अलग से है, एक दिन का टॉपिक है, अगर मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक है। सबऑल्टर्न क्या होता है, गायत्री स्पिवाक आ जाती है इसमें, ठीक है। सबऑल्टर्न मतलब लिटरेचर ऑफ द इंफीरियर पीपल, ठीक है, जो भाई जो मैं अभी बता रहा था, मार्जिनलाइज्ड क्लास है जो समाज में, ऐसे लोग जिनको अपनी बात को कहने का राइट ही नहीं दिया गया है। तो जब आपको पास राइट ही नहीं अपनी बात को कहने का, तो आपके राइट्स की बात करेगा कौन। फॉर एग्जाम्पल, आप शोषण आपका हो रहा है, मगर आपके पास ये हक ही नहीं है कि आप जाके बात रखो अपनी, तो आपकी बात कौन है रखने वाला, कोई नहीं है। तो सबऑल्टर्न इस तरीके के जो लोग हैं हमारे समाज में, उनकी बात करता है। और कैन द सबऑल्टर्न स्पीक, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, गायत्री स्पिवाक का लैंडमार्क ऐसे है, कैन द सबऑल्टर्न स्पीक, ठीक है। और उसके बाद फिर रिटरिक्स एंड प्रोसिडी, ये फिगर्स ऑफ स्पीच पे आ जाएगा पूरा यूनिट, ठीक है। ये हमारे यहाँ भी लगेगा, ये क्वेश्चन हम कर लेंगे। 18 to 22 पॉली में कम्युनिकेशन की यूनिट्स हैं, हम लोग कर चुके हैं। और 23 यूनिट नंबर 23 to 32 क्या है, ग्रामर है पूरी। तो इस तरीके से आपका ये पूरा यूनिट्स का सिलेबस है। आई होप आपने इस जो पूरा मैंने इसको समझाया, इसको नोट किया होगा, इसको देखिए। और जो हमारा बैच है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं, आई थिंक कल से 4 मार्च से हम शुरू कर देंगे उसको। मैं कोशिश करूंगा 1 लेक्चर पर डे अभी दूं, और आप लोगों के रुझान के हिसाब से भी चलते रहेंगे। तो ऐप KJ सौरभ सर जो हमारा ऐप है,
वहाँ आपको आज ये लाइव कर देंगे कोर्स, आप देख सकते हैं। हॉली वाले बच्चों के लिए विशेष छूट है, और इसके अलावा एमपीपीएससी में हमारे जो ऑल एग्जाम प्लेस है उनका भी सपोर्ट हम लोग ले रहे हैं इसमें। तो जो इंदौर में है हमारा इंस्टीट्यूट, तो हम चाहेंगे कि वहाँ से भी आप मोहित खेड़ा सर को भी कॉल करके हमारे बारे में पता कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं एमपीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बैच था, उसमें जो मॉक इंटरव्यूज के बैच में मैं जुड़ा ही था ऑल एग्जाम प्लेस से, और वहाँ काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तभी मैं धीरे धीरे इस तरफ आगे बढ़ रहा हूँ कि एक प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को उसमें गाइड कर सकें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, और आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप जो नंबर से उन पर कॉल कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।